Ladies and gentlemen, good day and welcome to Infraprojects Ltd Q2H1FY26 earnings conference call hosted by HDFC Securities Limited. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on beliefs, opinions, and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. We have the management from Infraprojects Ltd, Mr. Ajendra Kumar Agarwal, Managing Director, and Mr. Anand Rathi, Group CFO. I now hand the conference over to Mr. Parikshit Kandpal from HDFC Securities. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Ashi. Without taking further time, I'll now hand the floor to Ajendra ji for his opening remarks on the industry and the financial updates. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Parikshit ji. Dear all, a very good afternoon. I welcome you all to earnings call of Infraprojects Ltd for financial year 26. I also have with us on call Mr. Anand Rathi, the CFO, and Mr. Ankit Maheshwari, the Deputy CFO of the company. First, let me provide the key highlights on our Q2 performance, followed by recent developments in the infrastructure sector, followed by question and answer session. Revenue from operation in second quarter of fiscal 2026 stood at 1,234 crores as against 1,128 crores in corresponding period in previous financial year. The EBITDA margin, excluding other income, for the current quarter stood at 9.76% as against 10.39% in the corresponding period in previous financial year. During the quarter, the company has repaid the debt of 262 crores, which has resulted in true debt-equity ratio to 0.03, one of the best in the sector. Two, the company has won one power transmission and distribution project of 3,136 crore and one highway project of 246 crores. As of today, two road projects of 4,300 crores approximately are having L1 status. As on the date, the order book stood at 21,000 crore approximately. As on the date, one DBA40 project of 3,700 crores appointment date is awaiting bids of 4,300 crores approximately, which are to be opened. It constitutes one highway and two hydro and tunnel projects. Moving on the sector highlights and infrastructure development of India. Road sector. ICRA expects the road award by both to stand at 9,000 to 9,500 km in financial year 2026, slightly higher than the estimated 8,500 km for financial year 2025. A recent announcement for the construction of 25 greenfield expressways spanning 10,000 km and costing rupees 6 lakh crore, including beauty projects of 1.25 lakh crores. Total national highway toll collection are projected to surpass 80,000 crore for the first time in financial year 25-26, up from 72,900 crores in financial year 2025. The number of toll users increased by 16.2%. Financial year 26 reaching 1,173 million transactions. The toll rate growth is likely to remain at 3 to 4% in financial year 26. At the same time, the ministry has also asked the NITI Aayog
to review the 30 years old toll collection rules for national highways, aim to create fairer pricing system to make the model more acceptable by all the stakeholders. Power transmission. As per the National Electricity Plan, over 1.91 lakh circuit kilometers of transmission lines and 1,270 gigavolt ampere of transformation capacity is planned to be added till 2031-32. In addition, 33 gigawatt of high voltage direct current links are also be planned. The transmission plan provides visibility of the massive investment opportunity of over 9 lakh crore of transmission sector till the year 2032. Hydro and tunnels. We are looking forward to expand this sector through hydro pump storage projects. It has been taken a big leap now, and from this year onwards, roughly 3 gigawatts of PSP will be added on the average every year as per Central Electricity Authority. By 2032, the target somewhere around 50 gigawatt capacity coming from the hydro pump storage. Dear all, I would like to mention that for decades, the company has been at the forefront of national building construction highways and delivering world-class infrastructure that connects communities and drive progress. The global economy is witnessing the rapid transformation with energy transition and technological innovation and integrated logistics redefining the way industry operates. As part of our continued diversification strategy, the company is evaluating opportunity in the EPC business of oil and gas sector. In the offshore stream, and based on the opportunities available, we are targeting an yearly revenue contribution of 1,000 to 1,500 crores over the next 3 years. Further, we are happy to share that your company has moved to its own corporate office named as GRINFRA. Lastly, I wish to inform you that Vinod Kumar Agarwal, Chairman and Whole-Time Director of Infraprojects Ltd, has tendered his resignation from the position of Chairman and Whole-Time Director as well as from the office of the directorship of the company. It was due to health reason that has limited to his ability to devote the time and attention to the company. He has been associated with the company since its very inception in 1995. Over the past 3 decades, he has played a pivotal role in the shaping the growth and success of Infraprojects Ltd, guiding it from the modest beginning to becoming one of India's leading infrastructure companies. His vision and unwavering commitment have been instrumental in building the strong foundation on which the company stands today. We deeply appreciate his immense contribution and dedicated service throughout his long association with the company. Over to you, Anandji, to update on financial position of the company. Good afternoon. Thank you, sir. What are the key highlights of the Q2 performance of the company? Our standalone revenue from operation was 1,234 crore approximately, quarter ended September 2025, which is increased by 9.36% year-on-year basis. This was primarily on account of the higher execution of the projects. Our consolidated revenue from the operation was 1,602 crore in quarter ended September 25, which is increased by almost 15% year-on-year basis compared to 1,394 crore in quarter ended September 2024. Standalone EBITDA margin stood at 9.76% in quarter ended September 25 from 10.39% in quarter ended September 2024. This decrease is primarily due to one-time claim income recognized of rupees 21 crore in quarter ended September 2024. Consequently, our EBITDA margin at gross level also has marginally decreased to 24% in quarter ended September 2025 from 25% quarter ended
September 2024. Profit after tax at standalone level increased to 131 crore in quarter ended September 2025 as compared to rupees 115 crore in quarter ended September 24. This increase is the primary result of lowering of interest cost and depreciation during the quarter. Profit after tax at consolidated level decreased to 189.5 crore in quarter ended September 25 as compared to rupees 193.5 crore in quarter ended September 2024. External net worth stood at almost rupees 8,239 crore at the end of September 25, which was 7,888 crore at the end of fiscal 2025. Our net worth on consolidated level is rupees approximately 8,942 crore at the end of September 25, which was 8,503 crore at the end of fiscal 2025. Total standalone borrowing outstanding at the end of fiscal 2025, at September 2025, is rupees 240 crore with debt to equity of 0.03 times. Consolidated borrowing outstanding at the end of September 2025 is rupees 5,995 crore with debt to equity ratio of 0.67 times at consolidated level. During the quarter, company has made addition to the fixed asset amounting to rupees 18.5 crore. A net block of property, plant and equipment is rupees 1,146 crore at the end of September 2025. Investment in subsidiary company in form of loans and equity is rupees 2,698 crore at the end of September 2025. Balance promoter contribution required to be made for our operational or under construction HAM, BOT or power transmission project is rupees 3,205 crore, which we are expecting contribution of rupees almost 500 crore in the second half of the fiscal 2026. Our working capital in days at the end of September 25 is 98 days as compared to 170 days at the end of fiscal 2025. This decrease is primarily on account of decrease in SPV debtors and unbilled revenue. Our trade receivable at the standalone basis are rupees 686 crores, which includes 1,525 crore of HAM debtors at the end of September 2025. Our trade receivable at the consolidated level are rupees 195 crore at the end of September 2025. Our unbilled revenue at the standalone basis is around 560 crore at the end of September 2025. And at the same at the consolidated level is rupees 407 crore at the end of September 2025. Our inventories are around 583 crore at the end of September 25 as compared to 538 crore at the end of fiscal 2025. That's all about the financial highlights for the quarter ended September 2025. I take this opportunity to thank you all our stakeholders, including employees, business partners, vendors, bankers, and auditors who have supported the company in its transformation journey. On behalf of GRINFRA Limited, I also thank everybody for attending the earnings call. Thank you. May I request the moderator to open the floor for question and answer, please? Thank you, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Mr. Shravan Shah from Dolat Capital. Please go ahead, sir. Thank you, sir. Sir, first, a couple of questions on the guidance and then maybe have a detail on that. So now in the 1H on the revenue front, we have done just a 1.2% and we were looking at 10 to 15% growth this year. So that means 18 to 28% kind of a ask rate is needed in the second half. So just wanted how now we are looking at the revenue for FY26 and also in terms of the order inflow. So excluding the GST till now, how much we have received and how much more are we targeting this year? रेवेन्यू जो सेकेंड हाफ है उसमें अपने 5 से 10% का ग्रोथ करेंगे.
कुछ समय से कुछ प्रोजेक्ट अपने स्टार्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं आ पाई है। लेकिन जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए हैं उसके ऊपर अपन ने जो एक्सपेक्टेड जो एग्जीक्यूशन है वो किया है। लेकिन गवर्नमेंट साइड से कुछ प्रोजेक्ट के जो अपॉइंटेड डेट डिले हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले है। और नए प्रोजेक्ट्स के जहां तक सवाल है, अभी तक गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है वो काफी रोबस्ट है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे वर्किंग उतनी नहीं हो पाई है। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर नहीं तो फोर्थ क्वार्टर में ये ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। बट सर उसमें इनफ्लो के एंगल से कितना हमको लग रहा है कि हम कितना बीट करेंगे एंड कितना अपने को मिल सकता है, वहाँ पे भी मतलब एनएचआई एंड रोड साइड से एंड बाकी ट्रांसमिशन एंड दूसरे सब सेक्टर से हाइड्रो में इस सब से कितना हम लोग देख रहे हैं। Hey, so, Sean bhai, that guidance in terms of info for the current year remains the same what we have given in past. अभी issue is only thing is that project awarding और bidding जो है वो delay हो रहा है। तो what we are targeting for the current year, what we have target मतलब 20 to 25,000 crore का नया project we will try to win, right? And we are expecting that because जो road के भी काम है, right? Road के काम which anyway we are expecting that in quarter 4 that would be started awarding and bidding वो सारा होगा। So we'll be getting those projects in that period of time during quarter 4 only. So for the current year in terms of total incoming order book we are targeting between 20 to 25,000 crore. So far अभी तक हमारे को करीब 3,000 करोड़ का काम we have taken so far. तो एनएचआई की और जो मिनिस्ट्री के जो गाइडलाइंस हैं उसमें जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट की क्वालिफिकेशन और प्रोजेक्ट की साइज बढ़ाई हैं, तो हमको होपफुली है कि हम अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। बट क्वेश्चन मार्क अभी ये बिडिंग स्टार्ट होने का है। गवर्नमेंट के कुछ गाइडलाइंस प्रोजेक्ट अवार्ड करने में लैंड एक्विजिशन के लेवल की वजह से मॉनिटरिंग ज्यादा हो रही है, तो उसके बेस पे थोड़ा सा डिले हो रहा है। लेकिन प्रोजेक्ट की वंस ये बिडिंग स्टार्ट होता है तो ये टारगेट अचीवेबल है। बट वही सर सबसे बड़ा वही चीज है। सो वन इज द रोड, सो वहाँ पे भी कितना अभी तक आपको लग रहा है कि टेंडरिंग टोटल होएगा, और उसमें से अगर हम लोग 20,000 मतलब 15-18,000 करोड़ भी अगर रोड से देख रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ द विनिंग स्ट्राइक रेस ऑल्सो मैटर्स। अगर वहां से भी अगर 1 लाख करोड़ टाइप का ही अगर होएगा तो फिर अपने को स्ट्राइक रेस ज्यादा चाहिए, तो वही समझ आता है। बाकी ट्रांसमिशन हाइड्रो और वहां से कितना अपने देख सकते हैं। सो ये तो अभी का एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे अपने को अगर ग्रोथ करना है तो फिर सिमिलर काइंड ऑफ रन रेट वी ऑल्सो नीड 25-30,000 करोड़ टाइप का अपने को ऑर्डर इनफ्लो चाहिए, अगर अपने को वैसा टाइप का जो ओरिजिनली हम लोग सोच रहे थे वैसा अपने को ग्रोथ लाना है। ये अभी जो जिस तरह से अपनी जो प्लानिंग है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए हाईवे ही है। अगर हाईवे की बिडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग इसमें जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी हैम के अंदर और जो बीओटी प्रोजेक्ट के अंदर जो क्वालिफिकेशन चेंज किए हैं, तो फाइनेंशियली और टेक्निकल क्राइटेरिया जिस तरह से चेंज किए हैं वो अपने को फेवरेबल नजर आते हैं। और अगर बिडिंग स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग अचीव कर लेंगे मतलब इसमें। सो श्रवण, उसमें क्या है कि हाईवे में वी आर नॉट टारगेटिंग मोर देन 10,000 करोड़। In railway, metro, there also we are targeting 2 to 3,000 crore of work. In hydro, tunnel, power transmission, we have taken good amount of work, but और 2,000 crore का काम ले सकते हैं। तो what we are targeting, overall if we add all those segment ना, तो yes of course highway is the biggest segment for us. अगर and we are expecting कि 1.5 लाख करोड़ का तो bid होएगा in the current financial year itself, and we are targeting 10-11,000 crore the highway projects. So which I mean, given that that week which has happened in policies and जो circular NHI के ले गया in terms of qualification as well as net worth issue, we believe that we'll be able to get this kind of project. ओके एंड सर, अगर अपने को ऐसा 20-25,000 करोड़ जो सोच रहे हैं वैसा अगर आ गया तो फिर अगले साल में हम लोग कैसे, मतलब मोस्टली अगर ये आते हैं तो भी हैम एंड मे बी कुछ टोल वाले प्रोजेक्ट भी हम लोग लेंगे,
तो अगले साल में कैसे ग्रोथ देख सकते हैं कि वहां से कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम होएगा, तो FY27 में रेवेन्यू के एंगल से देखें, बिकॉज अभी अगर हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड हाफ में सर ने जैसे बोला कि 5-10% मतलब 3,800 करोड़ टाइप का हम लोग रेवेन्यू देख रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर देन टू कंपेंसेट जो अगले 3 साल से अपना ग्रोथ नहीं है, सो कैन वी सी 25-30% का ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल इन FY27? हाँ, 25% का तो FY27 सीम्स थोड़ा सा इट सीम्स फॉर अभी विजिबल उतना नहीं होता है 25% FY27, बट यस ऑफ कोर्स एटलीस्ट 10%, बिकॉज इस साल में भी व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि करंट ईयर में विल नॉट डी ग्रो, पर लास्ट 2 साल से अपन डी ग्रो कर रहे थे, करंट ईयर में विल बी प्लस ऑनली, मतलब व्हाट वी अचीव इन पास्ट। तो आई थिंक फॉर 27, यस ऑफ कोर्स, आई मीन करंट ईयर में अगर 20,000 करोड़ विल बी एबल टू गेट, तो 27 नहीं तो 28 certainly will be having double digit growth. नहीं, डबल डिजिट तो सर 10% इज ऑल्सो डबल डिजिट, सो वी नीड सिग्निफिकेंट, मतलब 25-30%। तो 10 तो करंट ईयर में भी वी आर टारगेटिंग, मतलब एक दो प्रोजेक्ट अपना डिले हो गया मे बी बाय 2-3 months, और दिस इज वर्किंग सीजन राइट, तो उस वजह से अदरवाइज आर अर्लियर एस्टिमेट वाज 10% एटलीस्ट फॉर द करंट ईयर ऑल्सो, तो मे बी वी नॉट बी गोइंग लेट से 10%, तो 5-7% तो अभी भी करेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड मे बी इन 27, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर वी आर गेटिंग इन द करंट ईयर, विल बी हैविंग एटलीस्ट 15% काइंड ऑफ ग्रोथ। ओके, एंड सर मार्जिन में सर अभी मार्जिन यही 11-12% का के रेवेन्यू बढ़ेगा तो वी कैन लुक एट 13% तक का भी मार्जिन होएगा। सी मार्जिन अभी क्या है कि इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज ऑर्डर किस तरीके से आता है। सी राइट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ डिसेंट ग्रोथ ऑल्सो वी नीड 20,000 करोड़ ऑफ ऑर्डर राइट। अगर मेरे को 30,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है वेयर वी कैन शो द ग्रोथ ऑफ 20%, तो माई मार्जिन वुड डेफिनेटली इंक्रीज, बट अदरवाइज आई बिलीव दैट कि वो आधा परसेंट कम ज्यादा में, आधा 1% कम ज्यादा, तो मे बी 13 और मे बी 11, दैट वुड बी द रेंज। Got it. And lastly, sir, I'm sorry to ये interrupt, sir. I'm sorry to got it. interrupt. Okay, no issues. Thank you. Thank you so much, sir. The next question is from the line of Mr. Abhinav from ICICI Securities. Please go ahead. Yeah, hi, sir. Thanks for the opportunity. My question is on the status of orders where we are L1. We were expecting LOA, and also the other project, Agra project, where appointed date is pending. So what are the challenges that we are facing? When can we expect it to be converted into LOA and, execution to start? अपने ये जो आगरा ग्वालियर का प्रोजेक्ट है, इसकी तो फंडेड अगले 1-2 महीने के अंदर नेक्स्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में आ जानी चाहिए। और जहां तक सवाल है इन 2 प्रोजेक्ट का, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो स्टेट के प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है कि भी ये प्रोजेक्ट रीबिडिंग में होंगे या इस पे अवार्ड देंगे। अभी तक क्लियरिटी आई नहीं है सरकार की तरफ से। ये मतलब वापिस प्रोजेक्ट की साइज वगैरह कुछ चेंज करने के या प्रोजेक्ट में स्कोप में कुछ डिस्कशन चल रहा है इनका, तो जो टेक्निकल इश्यूज है कुछ, तो वो टेक्निकल इश्यू रिजोल्व होता है, सेम रहता है तब तो प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे। अगर कुछ टेक्निकली कुछ चेंज करना पड़ा तो फिर प्रोजेक्ट रीबिडिंग में जा सकता है। Understood. And sir, when you say about 20,000 crores of order inflows, that is considering this L1s or apart from that? Yeah, apart from this is over and above. Okay. And sir, how is the pipeline looking like? Can you quantify segment-wise what is the opportunity? हाईवे में जो पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट है वो 282,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है, और रेलवे में करीब 26,000 के हैं, और मेट्रो में करीब 22,000 के हैं। इसी तरह से हाइड्रो में करीब 28,000 है, और टनल में करीब 19,000 के हैं, पावर ट्रांसमिशन में 27,000 है, और रोपवे में, और उसमें तो इतना कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, इस तरह से है। Understood. And the final question, what is the equity infusion that is pending for this financial year, H2?
We are targeting around 400 to 500 crore for the S2. Understood. Thank you, sir. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Mr. Mohit from ICICI Securities. Please go ahead. Hi. Good afternoon, sir. सर क्वेश्चन ऑयल एंड आपने कहा कि ऑयल एंड गैस में आप लोग कुछ 1,500 करोड़ की अमाउंट की बात कर रहे थे। 1,500 करोड़ पर एनम की बात कर रहे हैं और इसके लिए सर किस तरह के ऑयल एंड गैस के किस तरह के बिजनेस कर सकते हैं सर हम लोग नियर टर्म में? अभी अपन ईपीसी बिजनेस की बात कर रहे हैं और ये 3 साल के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। 3 साल में अब इस लेवल तक अपन आ जाएंगे। मतलब 1,500 तीसरे साल में मतलब वहाँ पर एनम का तीसरे साल। अच्छा, इसमें सवाल है सर हम लोग क्या कर सकते हैं सर? पाइपलाइन, कैन यू जस्ट क्वांटिफाई द काइंड ऑफ वर्क व्हिच वी कैन डू? हाँ, पाइपलाइन एंड जो ईपीसी बिजनेस है उसके अंदर अपन काम प्लेटफॉर्म का, पाइलिंग का। अंडरस्टूड सर। और सर देखो सर ये लास्ट ईयर सर आपने जीता है एक तो से आप हमारे पास आगरा का प्रोजेक्ट है और एक सर आपका एक हमारे पास ट्रांसमिशन का लार्ज प्रोजेक्ट है। दोनों मिलाकर 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हो तो ये दोनों मिलाकर ही सर नेक्स्ट ईयर तो ग्रोथ के लिए सर नेक्स्ट ईयर FY27 के लिए दोनों प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन सर अच्छा खासा रहेगा सर, राइट? मुझे लगता है कि 2,000 करोड़ सर इनसे आ जाएगा राइट नेक्स्ट ईयर के लिए FY27 में ये दोनों प्रोजेक्ट से दोनों का मिला के करीब 3,000 करोड़ का आएगा नेक्स्ट ईयर। प्लानिंग तो देखनी पड़ेगी पर मतलब ये क्या है, प्रोजेक्ट आर एक्चुअली रनिंग टू 3 years। मतलब ट्रांसमिशन इज 2.5 year और वो रोड इज बेसिकली 2.5 year अगेन। मतलब अभी स्टार्ट हुआ नहीं है तो इट विल टेक अनदर 3 years। तो आप ये समझो कि 2,000-2,500 करोड़ का फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू वी कैन टारगेट। अंडरस्टूड सर। लास्ट क्वेश्चन सर, ये अभी लास्ट ईयर से एनएचआई ने कहा था कि ये अप्रैल मई में कहा था कि 3,60,000 करोड़ का हाईवे बिड आ सकता है सर। तो सर आप देख रहे हैं सर बिल्डअप कुछ हो रहा है टेंडर्स का या बस स्लो ही हो रहा है अभी? देखिए अभी इसके ऊपर वर्किंग तो हो रही है, काफी रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, प्रोजेक्ट की साइज भी इन्होंने बढ़ाई है, क्वालिफिकेशन भी चेंज किए हैं, काफी काम तो हो रहा है। लेकिन बिडिंग का जहां तक सवाल है वो 4th क्वार्टर में ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली। अंडरस्टूड सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Mr. Ayush from Cavi Capital. Please go ahead. Yes. Hi, sir. So my question was regarding 2 projects. One is the Bamni one and the another one is Anjar Bhuj. So I think they passed due their completion date. So is there any update on those? Bamni and Anjar Bhuj. Let me come back. Your question is with respect to the status of those projects, right? Yeah, the completion date. I think they passed their completion date. The stipulated completion date. They're still under construction. Bamni का I think June 26 है. June 26. Bamni project is COD, scheduled COD is June 26, right? Okay. And Anjar Bhuj April 26. Anjar Bhuj is April 2026. That is maybe with along, right? So this is the status. Yeah. Okay. And sir, my next question is regarding to the maintenance capex that we're expecting in the H2 and also maybe the next. If you can give us some insights. Maintenance capex. Yeah, the capex we're expecting to do. See, maintenance, I don't think will be. I mean, maintenance is always the usual activities for us basically, and we are not basically, maintaining this kind of maintenance capex. Because yes, there are 2-3 projects which would be coming under major maintenance maybe next year, in first half or second half of the current year, or maybe first half of the next year. I mean, that's basis that the status of that road particularly maybe it may be delayed by another 1 year, so it may not be. Yeah. Okay.
Okay, sir. So, the last question is regarding that, are we going to transfer any project to the Indus Infra Fund during this financial year? Yes, I mean, this one particular project is already, I mean, where we have taken the board approval to transfer to that InvIT. And depending on, I mean, we can additionally, we can transfer one or two more projects in second half of the year. Okay. Thank you so much, sir. That is all. Thank you. Participants, if you wish to ask a question, you may press star and one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Mr. Vaibhav Shah from JM Financial Limited. Please go ahead. Yeah. Thank you, sir. Sir, in terms of equity requirements, so what would be the number for FY 26, 27, and 28? The total outstanding equity which has to be infused so far is now 3,200 crore over the period of next 3 years, right? So maybe on a yearly basis, it would be around 1,000 crore. And how much you have infused in first half of this year? कितना है देखा? First half. Balance contribution. Equity contribution in the first half. I have to check. I'll come back. Sure. Sir, what is our CapEx guidance for the entire year? The entire year CapEx won't be in the range of 100 crore. So far, we have put in almost 50 crore. Okay. Sir, I missed the number for HAM debtors. It is around 1,500 odd crore, right? 1,500 crores. Okay. HAM So debtors, you 1,520. mentioned that for this year, the revenue growth will be somewhere around 5-6 odd %, and next year we can see a 15% growth. Am I right? Yes, sir. Yeah. Next year, 15%, depending on if we'll be able to get the current year, 20,000 crore of incoming orders, right? No, but even if we consider the current backlog, if those orders also receive the appointed date, then also 15% should not be a challenge. Yes. I mean, that depending, I mean, see, one is major, which we are expecting that the Agra Bolia project, right? Yes. Which we are expecting that appointed date would be at least anywhere in the maybe first month of the next quarter. And accordingly, so, I mean, it depends, but generally what we are expecting that next year certainly will be growing. Yeah. Okay. Sir, secondly, for the two MSRDC orders, Nagpur-Chandrapur Package 1 and Pune Ring Road Package E6, so sir mentioned that there might be a cancellation. So, have you factored any revenue from the project in 27 in our estimates? No. So whatever There is a- confirmed orders are there, right? So it can be cancelled, both the orders. नहीं अभी कंफर्म नहीं है, मतलब ये टेक्निकल इवोल्यूशन चल रहा है, उसमें टेक्निकल कुछ अगर चेंज करना पड़ता है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. अभी तक तो आया नहीं है ना, काफी टाइम हो गया है तो. ओके, बट सर जो पैकेज 5 है W5, उसका तो काम शुरू हो गया है, तो बड़े नागपुर चंद्रपुर का चांसेस है, बट इवन पुणे रिंग रोड E6 में भी कैंसलेशन हो सकता है ड्यू टू दिस चैलेंज ऑन टेक्निकल ग्राउंड. हाँ, वो टेक्निकल ग्राउंड ही है सर, दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर. ओके, तो हम फैक्टर नहीं कर रहे अभी रेवेन्यू इन 27-28 फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन आवर एस्टिमेट्स. नो, अभी नहीं कर रहा. ओके. For current equity infusion, current year equity infusion was 600 crore approximately. In the first half? So far. Yes, first half. Okay. Thank you, sir. Those are my questions. Thank you. Participants, if you wish to ask a question, you may press star and one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Mr. Parvez from Novama Group. Please go ahead, sir. Hi, good afternoon, and thanks for taking my question. So a couple of questions from my side. The transmission project that we won this quarter, what would be the EPC cost of that particular project?
EPC cost we have considered for this in our order book is around 1,700 or 1,800 odd crore. So the project size was around 3,100 total. So for SPV it is around 3,200, 750 crore, and rest is basically material directly procured by SPV. Sure. You said the HAM debtors were about 15-20 crore, right? 1,525 crore, yeah. 25 crore. And lastly, of our 21,000 crores order book, what is the quantum of projects where we are yet to get the appointed rate? It's only one, because the transmission is effectively is getting, the project is taken a start as and when the company is handed over to us. So the last two projects which we have got is transmission one and Agra one. So Agra is yet to be declared appointed date, but yes, technically it is only Agra project for which appointed date is pending. Okay. And for the BSNL project, the work is already underway, right? BSNL? That is already started. Yeah, that is already started. Okay. Sure, sir. Thanks and all the best. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Mr. Sudeep from Ambit Capital. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for taking my question. The question is, how much amount of dividend and interest have we received from the InvIT in this particular quarter? So far, I think we have received total income from InvIT is around 350 and 140 crore might be. Sorry, sir, 340, is it? Just hold on. I'm just checking. 20 crore. 320 crore. For the current first half? For the first half, 320. 93 crores in first half and 320 overall. 320 crore total. 93 crore is basically in first half of this year. What is the total income so far we have received from the InvIT in the current first half? What last? That bifurcation is still pending. In terms of dividend and interest is separately, but total amount which we have received is 93 crore. 93 in first quarter, right? First half. First half. Okay. And just regarding one of the railway project that you won in Gujarat, so that has already started, right? Yeah. Yes. Okay. That's it from my end. Thank you. Thank you. Thank you. Participants, if you wish to ask a question, you may press star and one on your touchtone telephone. The next question is from the line of Mr. Shravan from Dolat Capital. Please go ahead. Hi, sir. सर ये डिविडेंड एंड इंटरेस्ट मतलब 93 करोड़ जो 1H में मिला है, सो फॉर फुल ईयर हम लोग पहले 230-240 करोड़ देख रहे थे, बट इट सीम्स के Q1 में 40 करोड़ था, नाउ इन Q2 इट इज 53 करोड़. तो ये रन रेट अभी इंक्रीज होएगा एंड फुल ईयर में कैसे देख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर कैसे हम इसको देख सकते हैं? Generally, what guidance we have got from the InvIT team is that overall distribution would be in the range of 11-12%, right? So depending on, because our investment is around 2,000 crore, so we can reasonably expect that 225 crore or 230 crore would be the total income from InvIT. Okay, that is kind of a recurring, even 27, 28 also, the similar number should be there. Yeah. Subject to we continue our investment, right, also. हाँ, but अगर हम लोग और ट्रांसफर कर रहे हैं तो this number will keep on increasing, ना? Right. Okay.
एंड सर सर ने स्टार्टिंग में कुछ बोला था लेकिन थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था। अभी तक हमने कितना वैल्यू का प्रोजेक्ट एंड कौन से प्रोजेक्ट बीड कर चुके हैं जहाँ पे बीड अभी ओपन नहीं हुए? ऑलमोस्ट 4,300 करोड़ का बिड अभी ओपन होना बाकी है। उसमें से 1 इज बेसिकली हाईवे, 2 आर हाइड्रो एंड टनल। 2 हाइड्रो एंड टनल। वैल्यू रफली बता सकते हैं कि कैसा हाईवे जो रहेगा वो 3,000 का टनल समझ लो, 1,000 के आसपास का हाईवे। ओके एंड हाईवे ये मोस्टली इट वुड बी अ हैम। यप। ओके एंड आगे भी अभी जो ये जो है वो भी मोस्टली अपना प्रेफरेंस हैम ज्यादा रहेगा कि टोल ऑल्सो काइंड ऑफ कंफर्टेबल? जो 10,000 करोड़ हम सोच रहे हैं तो उसमें मतलब 3-4 हजार करोड़ टोल भी ले सकते हैं और कैन बी इवन हायर ऑल्सो। नहीं, बिकॉज सी वो तो गवर्नमेंट मतलब NHAI खुद ही कंफर्टेबल नहीं इन टर्म्स ऑफ मोर टोल। उनका भी तो उनका रेशियो इन टर्म्स ऑफ टोल वुड बी 20%। Otherwise also, let's say if we are targeting 10,000 crore of order from highway, तो 2,500 करोड़ का 3,000 करोड़ का टोल ले लो, उसके बाद में then it more would be ham only. ओके समझ गया। एंड सर लेट्स से कि इफ वी गेट दिस 20,000-25,000 करोड़ इनफ्लो दैट वी आर लुकिंग एट, सो नेक्स्ट ईयर डू वी थिंक दैट काइंड ऑफ मतलब 10-15 हजार करोड़ प्लस का रन रेट इन द हाईवे इज ऑल्सो पॉसिबल? इफ नॉट देन वी ऑल्सो हैव टू सिग्निफिकेंटली कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर इनफ्लो फ्रॉम द अदर सेक्टर्स। So broadly next year के लिए how one can look at, even if let's say we get the 25,000 crore this year, so next year then will it be on the lower side from our side itself, और या कैसे देख सकते हैं उसको? And what you are asking is basically how will you go about highway, right? Going forward. हाँ मतलब हाईवे एंड ओवरऑल भी मतलब अगर 25,000 करोड़ का इनफ्लो अगर ये साल में आ गया तो अगले साल टोटल नंबर क्या होगा, उसमें हाईवे हम कैसे देख सकते हैं? मतलब हम क्या सोच रहे हैं, उतना आपको लग रहा है कि उतना अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली NHAI साइड या स्टेट लेवल के हम लोग देखेंगे? कौन से स्टेट में आपको लग रहा है कि अगले साल में आ सकते हैं? ये तो बहुत मतलब दूर का क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बट सी देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इफ वी आर टारगेटिंग 10,000 to 15,000 करोड़ ऑफ हाईवे, उतना तो अपन कर ही लेंगे। तो एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव इज दैट कि लेट्स से इवन इफ करंट ईयर वी आर गेटिंग 25,000 करोड़ और 20,000 करोड़, देन ऑल्सो नेक्स्ट ईयर विल बी टारगेटिंग एटलीस्ट नॉट ऑफ 25,000 करोड़, 30,000 के टारगेट करेंगे। उसमें 15,000 करोड़ ऑफ द हाईवे वुड बी ओके फॉर अस। एंड उसमें अब NHAI कितना लेके आएगा मोर, तो फॉर नेक्स्ट ऑल्सो आई मीन डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ बजट एलोकेशन इज बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट का। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एज ऑफ नाउ टू टेल अबाउट दैट व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर विल बी गेटिंग इन नेक्स्ट ईयर। थोड़ा सा एक बार बजट आ जाए इस बार का, देन ओनली विल बी एबल टू टेल। बट समझ नहीं आता है कि दिस काइंड ऑफ पेस वी कैन मेंटेन इवन नेक्स्ट ईयर। मतलब जैसे पावर ट्रांसमिशन में भी वी कैन टारगेट दिस काइंड ऑफ पेस, राइट? सिमिलरली मेट्रो में भी वी कैन मतलब कि बिकॉज ना अभी लग रहा है अपने को कि जितना जिस तरीके से प्रोजेक्ट अवार्ड या प्रोजेक्ट इज गेटिंग अप्रूव, तो CCA और जो गति शक्ति में जो प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, तो व्हाट वी बिलीव इज दैट दिस पेस प्रॉब्ली विल बी एबल टू कंटिन्यू नेक्स्ट एज वेल। ओके एंड अगर इसके अलावा अगर अपने को कोई सेक्टर अभी देखना है तो एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए वी विल नॉट बी लुकिंग एट एनी अदर सेक्टर अपार्ट फ्रॉम जो हमने अभी किया है, ट्रांसमिशन, रोड, टनलिंग, मेट्रो। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट काइंड ऑफ मतलब सोलर पावर पंप्स आपने बताया कि वो देख रहे हैं, बट सोलर या BESS के एनी अदर सेक्टर वो देख रहे हैं क्या हम? प्रोजेक्ट सेक्टर देखते रहते हैं। ओनली थिंग इज दैट इफ दैट उसमें क्या है, मतलब वी हैव टू बेसिकली देन एनालाइज द मैट्रिक्स ऑल्सो सेक्टर में, मतलब दैट काइंड ऑफ ग्रोथ इज और दैट साइज ऑफ वॉल्यूम इज अवेलेबल और नॉट, एक तो वो देखना है। और इन टर्म्स ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मार्जिन, व्हाट ऑल अपॉर्चुनिटीज प्रॉब्ली विल बी गेटिंग, राइट? ये सारा देख के तो वी आर ओपन टू वेरियस सेक्टर। ऐसा नहीं कि अपन सेक्टर नहीं देख रहे हैं।
सेक्टर देख रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली टारगेटिंग कि अभी ऑयल एंड गैस में ईपीसी कुछ करना चाहिए, बिकॉज देयर वी बिलीव दैट देयर इज अ साइजेबल वॉल्यूम वेयर वी कैन बेसिकली टैप दोज अपॉर्चुनिटीज. अब सोलर में भी क्या है कि अभी मतलब वी आर नॉट एबल टू रिकॉन्साइल विद इन आवरसेल्फ. हम लोग देख रहे हैं विल बी एबल टू, ऐसा नहीं हमने सोलर में भी बिड किया है, बट दैट काइंड ऑफ मार्जिन वहां पे मिल नहीं रहा है. सो वी आर नॉट वेरी बुलिश सो फार कि सोलर में हम कुछ कर पाएंगे. अगर सिनेरियो चेंज होता है सडनली विल बी सी क्या होएगा. देयर आर सो मेनी, आई मीन बिकॉज व्हाट एनएचआई हैज डन इन पास्ट, दे हैव चेंज द सर्कुलर इन टर्म्स ऑफ दैट नेटवर्क क्राइटेरिया, एंड दैट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर अदर एस्पेक्ट, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ सम रोड प्लेयर हु इज आल्सो बिडिंग इनटू ट्रांसमिशन सोलर, एंड देयर आल्सो अल्टीमेटली देयर नेटवर्क विल बी कंज्यूम्ड. So maybe that would be, opening up more revenue into highway sector either or in other sector, where we can deploy capital and at the same time we get good margins, right? So abhi ultimately how it will be unfolded, it is a matter of time. मतलब we have to basically समझना पड़ेगा इसको going forward. Once that awarding activity starts, then only will we be able to, and उसमें ज़्यादा will be able to give more clear guidance maybe after or maybe in Q4 only. एंड सर ये जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हुआ है, डू वी थिंक के और हैव यू वर्कआउट के जो लास्ट 2 years में पर्टिकुलरली एफर 24-25 वेयर many unlisted and unorganized players have won the projects from NHAI. So कितने उसमें से निकल जाएंगे? Roughly ballpark 20, 30, 40, 50% would be will not be able to kind of bid now. ऐसा कुछ trying to understand के competition कैसा रहेगा and margin में fight होएगा कि similar margin हो सकता है कि नहीं, वो sense से just wanted to understand. इसमें क्या होगा सर, प्रोजेक्ट वाइज देखना पड़ेगा कि इसमें मतलब आप ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन ये ऐसा नहीं कर सकते 50% बिडर रहेंगे 50% नहीं रहेंगे. बट नेटवर्क है, क्राइटेरिया है, टेक्निकल क्राइटेरिया है, तो डिफरेंट मतलब अपन ये कह सकते हैं. तो ये बिडिंग स्टार्ट होने के बाद में जल्दी इसमें 50% मतलब लोग रह पाएंगे, पर कौन कहाँ रह पाएगा, कौन किसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है. Thank you, sir. All the best. Thank you. The next question is from the line of Mr. Vaibhav from JM Financial Limited. Please go ahead. सर थोड़ा डिटेल चाहिए था ऑन द ओएनजी बिजनेस. सो ऑयल एंड गैस में व्हाट एक्चुअली आर वी, व्हाट वर्क्स आर वी टारगेटिंग, एंड कुछ हमने हायरिंग किया है, टीम बिल्डअप किया है इंटरनली. टीम बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, अपना इंटरनली हायरिंग भी किया है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोग को कुछ काम मिल जाएगा. एंड what I think What segments are we targeting within oil and gas? what revenue, What क्या क्या काम करना है उसमें, which all works are we targeting? तो इसमें जो प्लेटफॉर्म्स के और पाइपलाइंस के जो काम है उसको टारगेट कर रहे हैं. ऑफशोर में, इन ऑफशोर वी आर टारगेटिंग इन ऑफशोर एक्टिविटीज, जो पाइपलाइन लेइंग हो गया या फिर प्लेटफॉर्म मॉडिफिकेशन, प्लेटफॉर्म इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, राइट. तो ये सारा एक्टिविटी अपन विल टारगेट. सर तो ये डोमेस्टिक देख रहे हैं कि इंटरनेशनल के लिए भी आर ओपन? नहीं, डोमेस्टिक. नहीं, डोमेस्टिक. विल स्टार्ट एटलीस्ट डोमेस्टिक, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए फिर जाएंगे कहीं जाएंगे. ओके. सर उसमें बॉल पर क्या मार्जिन टारगेट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, कुछ बिड किया है हमने? नहीं, अभी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज चालू है, तो और मार्जिन तो मे बी 1 or 2 projects probably we can start with lower, maybe 8-10%, and then probably we'll target 15% kind of margin. ओके. एंड सर एक बार गाइडेंस अपना FY26 का रिट्रेट कर रहा हूँ मैं. So revenue would be 10-15% growth for 27, and for 26 it will be around 5% growth, right? Yeah. And sir margins कैसे रहेंगे इसमें for 26 overall? Margin I already अपन ने वो बोला था overall. In fact in previous question also I speak about that margin कि वो आधा 1% उधर between 11-13% anywhere between, ऐसा कुछ रहेगा. In the second kind of, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं.
Okay. on year. Okay. Okay. ठीक है, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Mr. Parikshit from HDFC Securities Limited. Please go ahead, sir. Hi, sir. I have a couple of questions. So first is on the transmission segment. Now we have 2,700 crores of order book. So just wanted to understand, first of all, that how much equity has been invested, total pending equity in these assets. And on the capability wise, are we now confident that we can start taking some of the EPC projects independently, like some of the peers of our do, to build diversification? Total equity, I'll tell you, but EPC may see generally why we are not that basically aggressive in terms of taking other players EPC, right? Because we are getting enough food for us within our company, right? I mean, let's say if we are targeting 5,000 crore of revenue and we'll be able to get, let's say, these kind of projects, probably we'll be able to do in-house only, and may not be we may not be going looking outward also. But if we are not getting, but because we are building EPC capabilities over there, and so far we have built enough good amount of team also here in terms of EPC. So we are not saying that we will not be doing outside EPC, but yes, I mean, so far we haven't looked through those kind of options. Reason being that we have enough food within I mean in-house at least. Okay. And so far we have invested around 275 crore of equity into existing transmission projects. And how much is the pending equity, sir? Pending equity would be for transmission. कितना हो गया? Transmission would be what around boot transmission for 115 crores. 115 crores. 2,000 odd crores will be pending. Sorry, sir, how much equity is pending in transmission? 2,000. 2,000, yeah. Total order book कितना है, sir? So total order book is around 6,000 crore. See, order book is different, but अभी current year में so total, I mean, आपने बोला total equity investment कितना है? 1,084 crore is pending. कितना है? 1,084 crore is pending for power transmission. 1,084 crore is pending. हाँ, 247 already invested. नहीं, इससे ज्यादा होगा ना. 6,000 crore का total order होगा अपने पास में. कितना होगा? नहीं, 6,000 या 5,000. As per the order book, आपका 13% है transmission में. 2,700 crore में क्या है? Equity we have to put in for material also which we are purchasing over there. So अभी जैसे 3,000 में से 1,300 crore तो material which we are procuring. For that also we need to put in basically equity. और जो अभी अपन ने जो डाल दिया है, so total equity which so far we have infused इसकी total कितना है? 275 so far invested. हाँ. So 275 we have infused already, and 1,100 crore of equity we have to put in additionally. Right? Not in, so sorry, my bad. It was 1,100 crore. Yeah. So total order book as per the presentation is 13% or 2,700. Yeah. So अभी order book कितनी है transmission में? 2,800. That is the order pending, right? Okay. 2,800 crores is EPC value of the order pending now as of now. EPC, right? 1,300 crore का तो material procurement है. That is directly we are procuring at SPV level. So our project size become more than what otherwise order book we are having, right? So 1,300 crores का जो material का revenue वो that will not come in the standalone entity? No. That is not the revenue. That would be kind of expenses which will be incurring in the SPV directly. That won't be revenue of here, right? See क्या होता है ट्रांसमिशन में काफी बड़ा मेजर पार्ट इज बेसिकली मटेरियल प्रोक्योरमेंट. This is equipment, transformer लेना है, सब लेना है. So that is not generally we are counting in the revenue. इसके accounting कैसे? This is 5,000 crores. आपके order book 2,700 plus 1,300 crores is roughly 4,000 crores. इसका 4,000 crores और 1,000 crore अपन already execute कर चुके हैं. For that reason we have put in that much of equity, right? So far, right? So pending order is 4,000 crore, right? But 4,000 में से EPC revenue would be 2,800 crore only. But revenue तो पूरा आपको दिखाना पड़ेगा ना 4,000 करोड़ का सर. तो कैसे सर वो asset बना. See, it is my asset I am creating over there.
So ये अगर अपन ये देखेंगे कंसोल लेवल पे, दैट इज नॉट द रेवेन्यू, बिकॉज कंसोल लेवल पे तो मैं मेरे एसपीवी से रेवेन्यू मिल रहा है ना मेरे को। राइट। ठीक है। दूसरा पूछना था सर, अभी ये सारा 2700 इन हाउस होगा एग्जीक्यूशन स्पेशली, so towers, transformer I understand you're purchasing because you don't manufacture it, but especially on the structure side, since you do some structural work for the highways, so यहाँ पे towers हो गया, ऐसा कुछ आप in house कर रहे हैं, that is also outsourced, and any plans of like incurring tower capex for tower manufacturing or conductor manufacturing? टावर मैन्युफैक्चरिंग वी आर हैविंग इन हाउस कैपेबिलिटीज, हम लोग कर भी रहे हैं, विल बी प्रोक्योरिंग इट इन हाउस ऑल्सो, और बाहर से भी लेंगे बिकॉज रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, तो वी हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड एज वेल। एंड कंडक्टर वी आर नॉट टारगेटिंग एनी मैन्युफैक्चरिंग एज ऑफ नाउ, राइट। एंड यस, बाकी ईपीसी तो हम कर ही रहे हैं। ओके, एंड इसमें अभी कैसे देख रहे हैं ग्रोथ का, बिकॉज अभी 5,000 करोड़ का आपका टोटल एसेट बेस हो जाएगा, देन इसके बियॉन्ड आप कैसे देखेंगे इसको, लाइक एवरी ईयर इज देयर 2-3 प्रोजेक्ट्स यू आर टारगेटिंग, एंड हाउ डू यू मोनेटाइज इट, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव वन एसेट व्हिच इज ऑपरेशनल नाउ, सो हाउ डू यू लुक एट मोनेटाइजिंग इट? So yearly, I mean next year onwards also, फिर जैसे current year में भी अपन ने अभी तक 3,000 करोड़ का एक ऑर्डर लिया, we'll be targeting another 2. So for next 2 years at least, I would say next 2 to 3 years we'll be targeting 5,000 to 8,000 crore of the orders from transmission. Or when I'm saying 5,000 to 8,000, that means excluding that material at least. So हमारा क्या होगा, revenue would be basically going forward, I'll be having at least 2,000 to 3,000 crore of the revenue coming in from transmission sector. Right, and as we are progressing, right, as of now we have total asset base of around 6,000 crore जो अपना ट्रांसमिशन में हो गया है, मे बी another next one and a half year, अभी so far we are having only one project which is complete, right, in our portfolio, and we are expecting in next 6 months of time maybe another 2 more projects will be completed. तो एक साइजेबल होने के बाद certainly will explore more options in terms of monetizing those assets by way of either doing InvIT or to talk to some investors, right, for selling these particular assets and all that. So what we believe is that enough demand is there for these assets in the market and we'll be able to sell it easily. Just last one question to Ajinder ji on a broader infra theme. तो सर लास्ट 2 साल से हम लोगों ने एकदम स्लो डाउन देखा है सेक्टर में, अभी गवर्नमेंट का फोकस भी जीएसटी कट्स के साथ थोड़ा कंजम्पशन में दिख रहा है, और जो पाइपलाइन हमारी पुश आउट हो रही है स्पेशली ऑन द नेचर व्हिच हैज बीन वन ऑफ द लार्ज ऑर्डरिंग सेगमेंट, सो ऑर्डर हैज मूव्ड आउट एज ऑफ नाउ, लुक्स टू हैव मूव्ड आउट फ्रॉम देयर. Even the water side, JJM has been struggling, and kind of as a theme, there has been issues around the collections. Even in railways, people are like taking a calibrated approach. तो हम मतलब अभी ट्रांसमिशन ही एक ही थीम दिख रही है जो अभी थोड़ी प्रॉमिसिंग दिख रही है, सो अभी हम कैसे देखें, मतलब क्या कॉन्फिडेंस आप दे सकते हैं आप बिकॉज यू वर्क ऑन द ग्राउंड, यू टॉक टू द पॉलिसी मेकर्स इन इंडस्ट्री, सो डू यू थिंक इंफ्रा इज नाउ not immediately government's priority or is more like consumption? हम कैसे सोचें इस चीज को, because this is one question we've been grappling with कि ordering पे क्या व्यू है, especially on the domestic side. और एक्सपोर्ट पे आप कुछ देख रहे हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए आप एक्सपोर्ट मार्केट देख रहे हैं क्या, कैसे मतलब इसी को कैसे बैलेंस आउट करें? इसमें गवर्नमेंट ने क्या है कि जो जिस तरह से इंफ्रा पे जो एक्सपेंडिचर किया है तो इनिशियली तो काफी अच्छा रहा, लेकिन बीच में क्या कुछ क्वालिटी के भी इशू आए, तो इसकी वजह से रिस्ट्रक्चरिंग इन बिटवीन चल रही है गवर्नमेंट की, लैंड एक्विजिशन के भी काफी इश्यूज रहे हैं, उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है, प्रोजेक्ट क्वालिटी एग्जीक्यूशन जो डिलीवरी ऑफ क्वालिटी है उसके ऊपर कुछ इश्यूज आए तो उसके ऊपर भी वर्किंग चल रही है. अभी मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी तो काफी अच्छी रहेगी. पावर ट्रांसमिशन में पावर में आप देखेंगे तो काफी बड़ा मतलब रिक्वायरमेंट आ रही है. रेलवे साइड में भी अभी मेट्रो की रिक्वायरमेंट हर सिटी के अंदर आ रही है. इसी तरह से हाईवे में भी काफी कुछ बिजनेस अगले साल मतलब इस साल के लास्ट और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी. अपने पार्ट पर अपन ये देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अपने लिए अपॉर्चुनिटी तो काफी अच्छी रहने वाली है. एक्सपोर्ट के लिए हम लोग नहीं देख रहे हैं बाहर, अभी तो कम से कम इंडिया में ही फोकस है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी में ही पार्टिसिपेट करते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ में कुछ मैन्युफैक्चरिंग की भी अगर अपॉर्चुनिटी आई तो देखनी चाहिए, जैसे पावर ट्रांसमिशन में हो, चाहे मतलब टावर में हो, चाहे कंडक्टर में हो,
इस तरह की फैसिलिटी को बनाते हुए और इसी को बैकवर्ड इंटीग्रेशन को करते हुए एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी बन सकती है आने वाले टाइम। ठीक है, ठीक है. I think I'm done with the questions, Ashi. I mean, so I think, sir, there are no further questions on the queue. So I would look forward to any closing comment from you, and then we can close the call. Thank you, Parishad. Thank you all the people, everybody who has joined this call. Thank you for the continued support which investor has shown. Our company will certainly try to do more and more, and try to participate with the government initiative of GRINFRA. Thank you. Thank you, Parishad. Thank you, sir. On behalf of HDFC Securities Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.